In this lecture, we are going to discuss difference between the mitosis and meiosis, a comparison between mitosis and meiosis. Mitosis and meiosis are two important types of division. Mitosis takes place in the somatic cells, and the number of chromosomes are same as in the parent cells, and the daughter cells are always similar with the parent cells. While in meiosis, the number of chromosomes reduced half, and the daughter cells are not always identical with the parent cells. Basically, meiosis reduces the number of chromosomes from two sets from diploid to one haploid cells. In the parent cells, the number of chromosomes are double, while in the daughter cells, the number of chromosomes are half. Whereas mitosis conserves the number of chromosome sets. The number of chromosomes in daughter cells are equal to the number of chromosomes as present in the parent cells. Therefore, meiosis produces cells that differ genetically from their parent cell and from each other. meiosis के दौरान जो cells produce होंगे, daughter cells produce होंगे, वो अपने parent से भी different होंगे और एक दूसरे से भी different होंगे because of the process of crossing over. Crossing over के दौरान जो chromosomes ने अपने parts को exchange किया. After the exchanging of the parts, they produce different types of cells having different types of chromosomes, whereas mitosis produces daughter cells that are genetically identical to their parent cell and to each other. जो mitosis के दौरान cells produce हो रहे हैं, as there is no crossing over in the mitosis, that's why the daughter cells are genetically identical to their parent cells. वो जो daughter cell होंगे वो parent cell की तरह होंगे और they are always similar to each other, आइडेंटिकल टू ईच अदर, क्योंकि उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी. जो हर डाटा सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस. मियोसिस रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स and meiosis produce genetically different types of the daughter cells. Their cells are different from their parents as well as from each other, while in mitosis the number of chromosomes conserved same as in the parent cells, and the cells that are produced after the mitosis as a result of the mitosis, their daughter cells are genetically identical to their parents and with each other. Have a look at the detail of the difference between the mitosis and the meiosis. Mitosis. Mitosis always occur in the somatic cells, that are the body cells, and it may continue throughout the life. Throughout the life, this process continues. Meiosis, it occurs in the reproductive cells and at a specific time. Meiosis occurs in the germ cells, in the gamete cell during the process of the gametogenesis, sperm production in case of the male and the egg production in case of the female. It always starts at a specific time. That time is called the puberty time, and also ends at a specific time. Mitosis, number second point, it involves a single division resulting in two daughter cells only. Mitosis में single division हो रही है और इसमें only two daughter cells produce हो रहे हैं. While meiosis, it involves two successive divisions and result in four daughter cells. इसमें दो डिवीजन meiosis 1 और meiosis 2 और four daughter cells बन रहे हैं. Two daughter cells, four daughter cells. Number third, mitosis. Subsequent mitotic division are similar to the earlier one. जो mitosis division हो रही है किसी भी सेल में, that is similar with the earlier type of division जो उसके parent cells में produce हुई है, जो उसके parent cell में involve हुई है. While the two meiotic divisions are dissimilar. दोनों meiotic divisions different हैं. First meiotic division is called the reduction, while the second meiotic division is called the equational divisions. पहले में जो homologous chromosomes हैं वो separate होते हैं. जो parents में अगर 6 हैं तो daughters में meiosis 1 के दौरान 3 chromosomes आएंगे, और जो second meiotic division है, second meiotic division में chromatids separate हो रहे हैं और 4 daughter cells में जो chromosome fruits होंगे वो half the number of chromosomes होंगे. So mitotic divisions are similar to the earlier one. My two meiotic divisions both are dissimilar. First meiotic division and second meiotic division. Now next point, mitosis. Prophase is relatively short and simple. The prophase of the mitosis is short and simple because there is no crossing over. There is no pairing of the homologous chromosomes. While the prophase 1 of the meiosis is very long, and it consists of 5 subtypes. 90% of the time is spent in the prophase 1 and the meiosis 1. In mitosis, there is no pairing of homologous chromosomes.
कोई पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है, नो सिनेप्सिस अकर व्हाइल इन मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड ऑफन अंडरगो क्रॉसिंग ओवर इन प्रोफेस 1 दैट वाज द टेचिटिन स्टेज। टेचिटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द प्रोफेस 1 ऑफ द मियोसिस 1। होमोलोगस क्रोमोसोम माइटोसिस के दौरान पेयर नहीं होते, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, और मियोसिस के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर होते हैं और अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। कब? प्रोफेस 1 के दौरान। माइटोसिस में क्रोमेटिड्स आर जनरली जेनेटिकली सिमिलर टू क्रोमोसोम्स दे अराइज फ्रॉम। जो क्रोमेटिड्स हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, दे आर सिमिलर बिकॉज दे आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट सेल्स, पेरेंट क्रोमोसोम। उसकी जो एग्जैक्ट कॉपी होती है उसमें वो सिमिलर होते हैं। This is the chromosome. After the duplication, it produced the exact copy. These two are the chromatids. ये भी chromatid है, ये दोनों chromatids हैं. In mitosis, these two are the similar because इन दोनों ने किसी parts को exchange नहीं किया. While the chromatids in the meiosis, the chromatids in the meiosis genetically different from the chromosomes they arise from due to the crossing over. इसमें जो chromatids हैं, जो हम लोग उस क्रोमोसोम अपने पार्ट्स को एक्सचेंज करेंगे, तो दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स ने अपने पार्ट्स को जब एक्सचेंज किया तो वो क्रोमोसोम अब सेम नहीं रहे। अब इस क्रोमेटिड के पास इस क्रोमोसोम का पार्ट है, इसने इधर एक्सचेंज किया और इसने इधर एक्सचेंज किया, दोनों ने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज किया। सो अब हम कह सकते हैं ये जो क्रोमेटिड्स हैं ये सिमिलर नहीं है बिकॉज आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर दे एक्सचेंज देयर पार्ट्स विद ईच अदर। In mitosis, no synaptonemal complex forms. Synaptonemal complex नहीं बनता. Why? There is no synapses. There is no crossing over and no synaptonemal complex form. In meiosis, synaptonemal complex forms between synapse homologous chromosomes. In mitosis, chromosomes do not unfold and no transcription and protein synthesis occur in prophase. प्रोफेस के दौरान कोई अनफोल्डिंग नहीं हो रही, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रही, कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही माइटोसिस में। वाइल इन केस ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम अनफोल्ड होते हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस में आकर इन डिप्लोटीन ऑफ द प्रोफेस 1, जिसमें oocytes ऑफ द सर्टेन एनिमल्स आकर रेस्ट करते हैं, वहां पे अरेस्ट हो जाते हैं, वहां पे उसको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई क्रोमोसोम अनफोल्ड एंड ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस में आकर इन डिप्लोटीन ऑफ द प्रोफेस 1. In mitosis, the daughter cells have diploid number of the chromosomes like the parent cells. It is also called the equational division because the daughter cells have the same number of the chromosome as in the parents. That's why it is the diploid division. इसमें जो daughter cells है उसमें diploid number of chromosomes होते हैं. Diploid mean 2n number of chromosomes as present in the parents. While in meiosis, daughter cells have haploid number of the chromosomes unlike the parents. Parents में diploid होंगे और daughter cells में haploid chromosomes होंगे. So in summary, we can say that mitosis somatic cells में और meiosis reductive cells में. Meiosis में सिंगल डिवीजन हो रही है और माइटोसिस में डबल डिवीजन हो रही है। माइटोसिस के दौरान जो डिवीजन है वो सिमिलर है, मियोसिस के दौरान डिवीजन डिफरेंट है। प्रोफेस माइटोसिस का शॉर्ट है, प्रोफेस मियोसिस का लॉन्ग है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर नहीं हो रहे माइटोसिस में और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हो रहे हैं मियोसिस के दौरान। क्रोमेटिड्स जो माइटोसिस के हैं वो सिमिलर हैं और क्रोमेटिड्स जो मियोसिस के हैं वो डिफरेंट हैं। माइटोसिस के दौरान कोई साइनैप्टिक कॉम्प्लेक्स नहीं बनता और मियोसिस के दौरान साइनैप्टिक कॉम्प्लेक्स बनता है बिकॉज ऑफ द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स हैं वो अनफोल्ड और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हो रही माइटोसिस के दौरान, जबकि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम अनफोल्ड भी हो रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है और प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है। जो माइटोसिस है उसके दौरान जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम diploid होते हैं as in the parent cell, while in the meiosis the number of chromosome are haploid unlike their parents, क्योंकि parents में diploid number of chromosomes होते हैं। Role of the mitosis and the meiosis in the animals or in the plant body. Mitosis enables the multicellular animals or plant gametophyte or sporophyte to arise from a single cell. एक single cell से multicellular organism originate हो रहा है, arise हो रहा है। How? The zygote, that is a single cell. Zygote always produce after that as a result of the fertilization. When egg and the sperm unite, they form the zygote. This zygote undergo the process of the mitosis and produce the morula, blastula, embryo, and then fetus, and after development it produces an adult. So single cell
arise or produce in adult or multicellular organisms by the process of the mitosis. Mitosis also produces cells for growth, increase the number of the cells, repair the cells, damage parts of the body. In some species, asexual production always takes place by the process of the mitosis. Uh, some gametes are it also produces gametes in the gametophyte plants, while meiosis produces gametes in animals or spores in the sporophyte plant, reduces the number of chromosome sets by half and introduces genetic variability among the gametes or spores. meiosis जो है ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हाफ करता है, हैप्लाई करता है और जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंट्रोड्यूस करता है सेल्स में बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इन द प्रोफेस वन। जो क्रोमोसोम है जो मियासिस के दौरान सेल्स बन रहे हैं, गेमीट्स बन रहे हैं, एग्स और स्पर्म, उनके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे, यूनाइट होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बिकम double diploid. So we can say meiosis mainly involved in the conservation of the number of chromosomes in the individuals. Diagrammatic representation are the difference between the mitosis and the meiosis. Parent cells before chromosome duplication. This parent cell has the 6 number of the chromosomes. इसमें 6 chromosome है. Chromosome duplication in mitosis, each chromosome duplicated and the chromosome consists of the sistochromatid. अब sistochromatid में मौजूद है duplicated chromosome having 2 sistochromatid. In case of the meiosis, chromosome duplication, जो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन के दौरान सिस्टोक्रोमेटिड्स तो बने, लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं उन्होंने अपने आप को क्या किया, पेयर किया। दे हेल्ड टुगेदर बाय द सिस्टोक्रोमेटिड्स एंड द कियाज्मा कोहेशन। अब यहाँ पे जो प्रोफेस है इसमें कोई होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग नहीं हो रही। each chromosome is separate, free, independent मौजूद है। While in the prophase of the meiosis, the chromosome pair with each other, the chromosome form the synapse, the chromosome form the chiasma, and the chromosome exchange their parts with each other. So there is a very important difference between the mitosis, prophase of the mitosis and the meiosis. क्रोमोसोम यहाँ भी डबल हैं, यहाँ भी डबल हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम उन्होंने अपने आप को पेयर नहीं किया, यहाँ पे क्रोमोसोम ने पेयर किया, यहाँ पे क्रोमोसोम ने माइटोसिस के दौरान अपने पार्ट्स को एक्सचेंज नहीं किया, यहाँ पे क्रोमोसोम ने अपने पार्ट्स को एक्सचेंज किया। दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड दैट कि प्रोफेस ऑफ द माइटोसिस इज शॉर्ट एंड द प्रोफेस ऑफ द मियोसिस इज द लॉन्ग। 90% टाइम मियोसिस का प्रोफेस 1 के दौरान स्पेंड होता है। आफ्टर दैट in metaphase of the mitosis, individual chromosome line up at the metaphase plate. क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम ने अलग-अलग अपने आप को मेटाफेस प्लेट पे क्या किया, लाइन किया, अरेंज किया मेटाफेस प्लेट पे। While in metaphase 1, the pair of the homologous chromosome line up at the metaphase plate. जो homologous chromosomes हैं उन्होंने अपने आप को अरेंज किया। अब यहाँ पे टेट्राड्स बाइवैलेंट क्रोमोसोम ने अपने आप को अरेंज किए हुए। अब नेक्स्ट फेज में क्या होगा, एनाफेज और टीलोफेज ऑफ द माइटोसिस 1 में जो सिस्टोक्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट होंगे एनाफेज के दौरान, और टीलोफेज के दौरान वो न्यूक्लियर मटेरियल बन जाएगा और दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे, और ईच डॉटर सेल्स हैज द 6th नंबर ऑफ द क्रोमोसोम एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। पेरेंट सेल के पास भी 6 क्रोमोसोम्स थे और डॉटर सेल के पास भी 6 क्रोमोसोम है। सो इट इज अ इक्वेशनल डिवीजन एंड आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड एज इन द पेरेंट्स, जस्ट लाइक द पेरेंट्स। While in the meiosis, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 के दौरान क्या होगा, सिर्फ जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम separate during the anaphase 1, सिस्टोक्रोमेटिड्स remain attached in the centromere. सिस्टोक्रोमेटिड्स अब भी अपने जो सेंट्रोमेयर के साथ अटैच्ड है बाय द कोहेशन प्रोटीन्स। अब मियोसिस 2 माइटोसिस के दौरान सिर्फ एक डिवीजन हो रही है, वन सिंगल डिवीजन है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। व्हाइल इन मियोसिस 2 टाइप्स ऑफ डिवीजन है। इन द फर्स्ट डिवीजन दैट इज कॉल्ड द मियोसिस 1 एंड सेकंड इज कॉल्ड द मियोसिस 2। फर्स्ट में रिडक्शन हो रही है। पेरेंट्स में कितने क्रोमोसोम है, 6 क्रोमोसोम है। अब डॉटर में कितने क्रोमोसोम होंगे, 3 क्रोमोसोम। इसमें भी 3 क्रोमोसोम, इसमें भी 3 क्रोमोसोम है, बट ईच क्रोमोसोम इज इन डुप्लीकेटेड फॉर्म। हर क्रोमोसोम का अपना सिस्टोक्रोमेटिड्स मौजूद है। अब हमने प्रीवियस स्लाइड में एक और बात डिस्कस की कि जो सिस्टोक्रोमेटिड्स हैं वो मियोसिस में डिफरेंट होते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें नजर आए ये क्रोमोसोम, इसका सिस्टोक्रोमेटिड्स डिफरेंट है, इसका क्यों, इसके पास जीन्स डिफरेंट, इसके पास जीन्स डिफरेंट है बिकॉज़ ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। अब मियोसिस 1 के दौरान क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए।
होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए। अब मियोसिस 2 के दौरान क्या होगा, मियोसिस 2 के दौरान वही प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, उसके दौरान जो सिस्टर क्रोमैटिड्स वो सेपरेट होंगे और हर सेल के पास 3 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे और दिस इज द रिजल्ट ऑफ द मियोसिस 2। 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हर डॉटर सेल के पास 3 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम है। पेरेंट्स में 6 है और डॉटर सेल के पास 4 पेरेंट में 6 क्रोमोसोम है और डॉटर सेल के पास 3 क्रोमोसोम्स हैं। पेरेंट्स मिटोसिस के दौरान 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबकि मियोसिस के दौरान 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड द मियोसिस। प्रोफेस शार्ट है, प्रोफेस लॉन्ग है। इसमें सिर्फ इंडिविजुअल क्रोमोसोम अलाइन कर रहा है और मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन कर रहे हैं। इस जो एनाफेज और टेलोफेज 1 के दौरान सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो रहे हैं, एनाफेज 1 के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और मियोसिस 2 के दौरान जो एनाफेज होगा उसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे और 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ये सेल भी 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा, ये भी 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। So the meiosis is called the reduction division, number of chromosome half. Parents में 6 थे और daughter cell में 3 chromosomes आ गए। That's all about the difference between the mitosis and the meiosis. Thank you so much.